Happy New Year to all of you. So, New Year now, I am Dr. Shruti Thar, consulting gynecologist from Mulund West. In this new year, we are all gonna be talking about hygiene. When we talk about hygiene, most important, menstrual hygiene related problems in young women, in adolescents, in older age, society related norms and rituals related to menstruation, which are age old and haven't changed in past 1000 years. So let's begin with what is menstruation. In our terms, menstruation is regular shedding of endometrial lining. But what is for you? Monthly periodic bleeding per vaginum is menstruation. हिंदी में बोला जाए तो हर महीना जो पीरियड आता है, MC आता है, is nothing but menstruation. And why does that happen? It is our body's preparation. So as we embark into puberty and we grow, all the females grow, adolescent and post-adolescent, hormonal changes in our body causes menstruation, causes the endometrial lining, which is in the uterus, to thicken, and at the end of every month there is this bleeding, shedding of the endometrium. So this new year, new decade, we all are gonna be about hygiene. When it comes to us, it is all about menstrual hygiene. What is menstruation? Menstruation है क्या? So in our medical terms, it is regular shedding of the endometrium lining. For you to understand, it is uterus and the endometrial lining inside the uterus which causes periodic bleeding per vaginum. It happens to all the girls post-puberty, post-adolescent. That is what we call growing up. अभी menstruation means period आना, MC आना जो बोलते हैं वो क्यों होता है? Why does that has to happen? Is because of the hormone related. After puberty, during puberty, that is what we say growing up. So during puberty, the hormones in our body changes, causes regular shedding of endometrium because of ovary and follicle growing in the ovary. Menstruation सब लड़कियों में होता है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है. वो उसका मेंस्ट्रुएशन का मतलब पीरियड आना जो बोलते हैं वो वही होता है कि हर महीने यूट्रस में से अपने वहाँ पे ब्लीडिंग होता है. किसी को 3 दिन होता है, किसी को 7 दिन होता है, एंड उसको ही मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं. मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे बहुत सारे कंप्लेंट्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं गर्ल्स को, लेडीज़ को. वो क्यों होते हैं? उसके लिए मेंस्ट्रुएशन क्यों हमें ही होता है, लड़कों को क्यों नहीं होता है, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है. यूट्रस सिर्फ लड़कियों में होता है. सो यूट्रस हम जब भी बड़े होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसके वजह से जो बोलते हैं अंडा बन रहा है, एग बनता है, एंड व्हेन इट रप्चर्स एंड जब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, देन देयर इज शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम या फिर पीरियड आना. पीरियड्स कि सबको बोला जाता है कि हर महीने ठीक तारीख पे पीरियड्स आते हैं. मोस्ट ऑफ द गर्ल्स को पीरियड्स डायरेक्ट सेम टाइम पे आते भी नहीं है, इरेगुलर पीरियड्स जिसे हम बोलते हैं. रेगुलर पीरियड्स का मतलब क्या? तो हर महीने इट हैज़ टू हैपन एवरी मंथ, लास्टिंग फॉर 5 to 7 days, एंड ब्लीडिंग मॉडरेट 3 to 4 pads पर डे, एंड पेन नहीं होता है. सो बट वी हैव 50% ऑफ द फीमेल्स कंप्लेन करेंगे कि हमारे इरेगुलर है. आइदर इट कम्स एवरी 15-20 days और इट कम्स आफ्टर 2 months, 2.5 months. किसी को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है, किसी को पेन बहुत ज़्यादा होता है. दे कैन नॉट सिट, दे कैन नॉट वर्क फॉर दोज 4-5 days. सो वाई? सो देर आर लॉट ऑफ रीजन्स क्यों इरेग्युलर पीरियड्स होना है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज़ एज रिलेटेड. बच्चियाँ जो होती है एडोलेसेंट एज 13-15, टीनेजर्स जिसको बोलते हैं, they have irregular periods because just they are growing up. The body is getting used to the hormonal changes. Similarly 35-40 years के जब periods जाने में रहता है तभी periods irregular होते हैं. Cultural wise body weight के हिसाब से रहता है. If you are overweight, obese, तो periods irregular हो सकते हैं. या फिर stress related. Stress is the most important reason क्यों periods irregular होना है. It can be physical stress, emotional stress. So if you notice अगर workload ज़्यादा है, exams है, so then your period cycles that month will be irregular. कभी कभार it is hormone related like thyroid है, diabetes है. So anytime, every time you have irregular periods, it is most important to show a gynecologist. See, everything is normal, there is no other pathological conditions, कोई और बीमारी नहीं है. Then we are okay. Sometimes it just happens. Your body tendency is to have irregular periods.
बट येस इट इज़ ऑलवेज बेटर टू इवेल्युएट कि रेगुलर पीरियड्स क्यों हैं. And so get your regular checkups done, get your body checkups done, physical exercise. So if you're overweight or if you've gained weight in a very short period of time, if you've lost weight in a very short period of time, any changes in your body then normal is gonna cause irregular periods. So it is very important to identify ki why we are getting irregular periods, and is it any underlying condition, yeah, it's just normal. Now talking about menstruation, like we all know, it happens every month to month. Ask any girl, ask any ladies, and they'll tell you what a cumbersome effort that is. But most important thing about menstruation is how do we maintain menstrual hygiene, cleanliness कैसे रखना है menstruation के टाइम पे, which is very important, because आधी से ज़्यादा बीमारियाँ लड़कियों को या फीमेल्स को पोस्ट पीरियड्स या पोस्ट मेंस्ट्रुएशन होते हैं, बिकॉज वो हाइजीन की वजह से हाइजीन नहीं रख पाए, क्लेanलीनेस नहीं रख पाए या नहीं हो पाया, उसके वजह से इन्फेक्शन, आगे जाके प्रेगनेंसी नहीं रुक पाना, ऑल ऑफ दैट हैपन्स इज बिकॉज ऑफ दिस. वी थिंक इट इज़ वेरी स्मॉल डील बट इट इज़ नॉट. सो क्या मेंस्ट्रुअल हाइजीन मीन्स क्या, व्हाट आर वी सेइंग? सो आप इफ़ वी आर गोना ब्लीड एवरी 3 to 5 days इन दैट मंथ, वो 5 days ऑफ दोज मंथ में क्या करना है? Make sure you use cotton underpants. Cotton underpants use करना instead of the synthetic ones because they don't let you breathe. पैड यूज़ करना है. अभी तो बहुत सारे reusable pads आ गए हैं, cotton pads आ गए which are very easy to reuse as well, to clean also, and it helps also. वो कपड़ा यूज़ नहीं करना है because कपड़ा does not work that way. Germs वहाँ पे रहेंगे. Cleanliness of those कपड़ा are difficult. Even if you're using those disposable pads, make sure you change every 6 to 8 hours. पैड पूरा भरे या ना भरे, every 6 to 8 hours वो चेंज करने ही है. So the plus point of reusable pads are we can reuse it, so financially थोड़ा वो effective हो जाता है. And people ask me कि अगर reusable pad ही यूज़ करना है तो कपड़ा क्यों नहीं? The thing is, reusable pad is made such कि वो soak कर लेगा. The bleeding, the blood, it will soak it out, तो dry रहेगा. What happens is because कपड़ा soak नहीं कर पाता, so then it stays wet and moist, which causes lot of infection. फिर I have lot of patients coming post menstruation with सफ़ेद पानी जा रहा है, पेन हो रहा है, या फिर बाद में बहुत वहाँ पे इचिंग हो रही है, प्लूराइटिस या खुजली आ रही है. All that happens is because वो 4-5 days में हमने ध्यान नहीं रखा है. So make sure menstrual hygiene, cleanliness maintain करें. Avoid using public bathrooms. Public bathroom use करें तो अभी स्वच्छ भारत अभियान, तो प्लीज़ इंडियन टॉयलेट प्रेफर करें ओवर इंग्लिश टॉयलेट्स, बिकॉज इंडियन टॉयलेट्स में एटलीस्ट वो वी नो दैट इट्स अ लिटिल बिट क्लीनर एंड लेस जर्म्स देन योर इंग्लिश टॉयलेट्स. Always clean it with water and pat it dry with a tissue or a cloth or anything, so that वो एरिया में moisture कम रहे, moist wet कम रहे. Like we already said, pads every 6 to 8 hours change करने हैं. If it's a disposable pad, make sure you dispose it nicely so that हम environment को और गंदा और germ infected ना करें. पहले तो प्लास्टिक बोलते थे, अभी तो प्लास्टिक अवेलेबल नहीं है. So make sure you drain the extra blood and wrap it in newspapers, lot of newspapers, and then dispose it off nicely so that the other animals, crows या insects, dog हो, उसको छुतरे उड़ा के जो हमें रास्ते के बीच में दिखते हैं वो ना दिखे. That is just unhygienic for you and for the whole community at large. So hope you liked this video and hope we were able to burst some of your myths and some of your misconceptions. Thank you so much for listening to this, and if you have any questions you can get back to us and we will try and resolve that for you. Thank you.